Okay, so very good morning to everyone. Um, so today we will start with your new topic, that is your paper 2, unit 1, that is your mass spectrometry. Actually, the whole paper 2 is based on your mass spectrometry. So before that, in your part 1, semester 1 and 2, you see lots of instrumentation like chromatography and spectroscopy. That is UV visible spectroscopy, atomic absorption spectroscopy, emission spectroscopy, then FTIR. So every instrument has their unique features and properties. Same way, the mass spectrometry is also very specific with respect to mass. So we will from today onwards we will see the exactly what is the mass spectrometry. This is the PPT on, definitely it is from the slide share. I have picked up from the slide share because I feel the content in the PPT is very good and it is easy to understand. So better I just copy paste in my PPT. I prefer that I should take the same PPT for your reference. So we will discuss. First of all, I will read two, three slides because it is completely new topic for you, and I hope you. But I don't know you have the basic idea regarding the mass spectroscopy or not. So I prefer to I should start with the ABC. That is exactly what is the mass spectrometry and exactly how what is the things happen with the mass spectrometry. Just want to mute all participate. So it should not be the okay. So let's begin. Okay, so this is the content in this particular PPT, which is not that much important. So we will discuss with the what is exactly mass spectrometry. So mass spectrometry is one of the primary spectroscopic methods for molecular analysis available to the organic chemist. So it is a microanalytical technique requiring only few nanomole of the sample to obtain the characteristics information pertaining the structure and molecular weight of the analysis. So it is not concerned with the non-destructive interactions between the molecule and electromagnetic radiation. So what exactly in this particular spectroscopy? So in mass spectrometry, basically it is from the, as we say, I have already started the new topic with a word-to-word discussion. So there are two words actually in your topic. It is a mass and spectroscopy. So do you know very well about what is spectroscopy? It is nothing but the analysis of the sample with respect to, it is the interaction of matter with the radiation. So here the concept is little bit different with respect to the spectroscopy, but I hope you do have the idea but with respect to the spectroscopy. So we'll discuss with the mass. Mass is nothing but the weight of the particular atom. So weight of the, what is the weight of the particular atom? अगर किसी भी atom का हम लोग को weight find out करना है, तो what is the weight? Okay. So we will first discuss what is exactly mass. So mass find out करेंगे, spectroscopy तुम लोग को पता है, then you can easily understand what is the mass spectrometry. So anybody can write in chat box what is a mass of a particular atom. I know it is the weight of the particular atom. I don't want that answer. It is the weight of the particular atom. Apart from that, anyone else want to share anything? Exactly mass किसके वजह से particular compound या फिर particular atom को weight आता है? Is there anything present in that particular atom? Yes, anybody can write. What is mass? Yes, Varat, Soumya, Sheetal, Supriya, Dhanashri, where are you all? Slowly go. Those who are from chemistry, they are definitely know what is the mass of that particular atom. Weight of the proton and neutron in that atom. Very good, Varat. Thank you so much. The number of protons, okay. So Varat is giving the perfect answer. That is the weight of the proton and neutron. Okay. So I say, as per the rule of the chemistry, everything in the universe is made of the three things. What are the three things? That is the electron, proton and neutron. कुछ भी हो, ठीक है, जो कुछ भी चीजें यूनिवर्स में बनती है, so according to the chemistry basic fundamentals, these all the things are made by the three atoms. That is not atom, three things, that is your electron, proton and neutron. Out of that, electron is present around your nucleus and proton and neutron are present in the center of that particular atom, that is which call it as a nucleus and which having the specific mass. So mass is nothing but the
weight of your, that is number of protons plus number of neutrons present in your particular compound. Number of protons are almost equal to the number of electrons, and is always equal to the number of, almost is equal to the weight of the neutron. We exactly don't know the what is the amount of neutron present. Like in, when we find key electrons are don't have weight, but when you measure the weight of the particular atom, so नंबर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल इसका वेट होता है. सो जनरली कंसिडर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी, सो जो भी तुम लोग का टोटल मास होता है वो मास में से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करते हैं, दैट इज द वेट ऑफ द न्यूट्रॉन्स होता है, बिकॉज एग्जैक्टली न्यूट्रॉन कितने होते हैं वो फाइंड आउट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. उसके बाद देयर आर फ्यू टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटम एंड एटॉमिक मास. दैट इज एटॉमिक, सबसे पहले दो होता है, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर. सो जो पीरियोडिक टेबल में होता है, that is based on the electron, proton and neutron. So mass is nothing but the weight of the number of protons and neutrons present in the compound. Okay, so ये basic fundamentals clear हुए. Now read once again this particular slide to understand the particular concept. So mass spectrometry is one of the primary spectroscopy method for molecular analysis available on the sea. Generally हम लोग use करते हैं molecular analysis के लिए. Second is the important point. It is a micro analytical technique requiring only few nanometer of sample to obtain the characteristics information of detecting the structure and molecular weight. Majorly, it is used for finding out the molecular weight, or you can find out the structure of the unknown compound. Okay, this is the one of the best, or you can say unique techniques to find out a weight of the particular atom, and based on the weight of the particular atom we can easily find out the structure and their fragmentation, so we find out the structure of the particular atom. और एक इसका मतलब there are 3-4 point which is very important. सबसे पहला point है कि the sample which is required, it is a nanomoles. मतलब whenever you are synthetic और कोई new compound हम लोग extract करते हैं तो बहुत कम quantity में होता है, और this is the instrument where we can actually apply the nanomoles of sample. मतलब एकदम small amount of sample से भी we can easily detect the characteristics of that particular compound, specifically for unknown compound अगर find out करना है. तो जनरली इससे पहले के मेथड्स में हम लोग क्या करते थे, जनरली वी आर यूजिंग, पहले वेट केमिस्ट्री करते थे कि कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, अल्कलाइड प्रेजेंट है, सॉरी, या फिर तुम लोग का कौन सा कीटोन प्रेजेंट है वगैरह, ऐसे ग्रुप फाइंड आउट करते थे. देन उसके हिसाब से कलर वगैरह से वी कैन जस्ट अज्यूम कि ये ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं. देन एफटीआई से वगैरह हम लोग उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालते थे. देन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह फाइंड आउट करते थे. ये सारी चीजें फिर मिला के फाइनली भी हम लोग सजेस्ट करते थे कि एग्जैक्टली कौन सा कंपाउंड हो सकता है. बट व्हेन वी आर यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोस्पेक्ट्री हम लोग को ये सारी चीजें करने की कुछ भी जरूरत नहीं. यू जस्ट सिंपल द स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल. द वे उसका बेसिक प्रिंसिपल है, द स्प्लिट द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट, एंड आयंस फॉर्म करता है वो, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आयंस जनरली तुम्हारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, एंड बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर you can easily identify the particular compound. The another major point, or you can say it may be the drawback of your mass spectrometry, that is it is not concerned with the non-destructive interaction between the molecule and electromagnetic radiation. So first of all, I just want to know what is the difference between destructive and non-destructive. Anybody knows what is exactly destructive and non-destructive? I will go little bit slow in this particular lecture because this is the first lecture, and I just want to few concept want to clear before I start the actual mass spectrometry. So just let me know what is exactly the destructive and non-destructive techniques. Anybody is having any idea? What is exactly destructive and non-destructive? Okay, Sheetal say कि the sample get destroyed in the process like the gas chromatography. Exactly, that is the destructive. When the sample is destroyed, whenever you are performing the analysis, you cannot reuse the sample. That particular technology or that particular instrument is called as a destructive. And when your sample is, you can get the sample and you can repeat the analysis with other instrument. That particular method is called as a non-destructive. So this particular is a mass spectrometry is not concerned with the non-destructive interaction between the molecules and electromagnetic radiation.
For example, if you take the example of the UV visible spectroscopy, it is a non-destructive technique because where the sample is just interact. That is the molecule. Whenever molecule absorb the electromagnetic radiation, it is goes on excited state. When you remove the source of light, the molecule again go to their normal state, and we can use the sample for further analysis. मतलब UV visible से analysis के sample का करने के बाद same sample जो है or we can use for other techniques or other analysis purpose के लिए. It is not completely destroyed. But in mass spectrometry, it is in the family of the non-destructive technique. जैसे शीतल ने बोला, in GC also we generally destroy the sample because it is completely burned. Here also the sample it is get sorry, so sample is completely destroyed where we cannot use the sample repeat, but I don't think so it will be get a more issue with respect to sample because here we hardly get the nanomoles of sample, मतलब very few amount of sample. So उतना sample destroy होने से I don't think so किसी को कितना effect आता होगा. So if it is in a non destructive, still it is a I can say more क्या बोल सकते हैं, best technique for analysis of the particular compound. Okay. So as with this particular PPT, we can move for the next slide and discuss a few more points. Okay. So it involves generally mass spectrometry में होता क्या है? So it involves the production and separation of ionized molecule and their ionic decomposition product, and finally the measurement of the relative abundance of the different ion products. It is thus the destructive technique in the sample is consumed during the analysis. In the most of the cases, nascent molecule ion of the analyte produce the fragment ion by cleavage of the bond and by resulting fragmentation pattern constituted of the mass spectrum. Thus, the mass spectrum of each compound is unique and can be used as a chemical fingerprinting for a characterization of the sample. I know you don't understand anything from this slide, so let's discuss exactly slide में उन्होंने explain किया. अभी तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में से जो देखा इसमें से वी कैन सी after reading the first slide, the conclusion of your first slide is nothing but the we are studying the mass spectrometry. Mass spectrometry, it is a non-destructive technique. Second point, mass spectrometry require the nanomoles of sample for the analysis. Next, it is a not like a HPLC where it interact with the light, definitely not. Here, what is exactly involved? So, it's involved the production and separation of ionized molecule. Okay. So, first we will discuss exactly what is ionized molecule. So, first of all, I just want to ask you the question, what is the difference in ion and electron? First of all, is there any difference between the ion and electron? Anybody, if anybody is no, first of all, write the yes. Or if you say no, there is no difference, just write the no. So just write in chat box yes. Varat say yes, ma'am. Okay. Dhanashri say yes, ma'am. So Dhanashri will answer for this particular question. Ki what is exactly ion and what is exactly electron? Ma'am, when a molecule dissociates, it's turn into the ion, means positive ion and negative ion. Exactly. Okay. When molecule dissociate, it form into the ion. Okay. Okay. Thank you so much, Dhanasri. So for those people who are from biotech and who are from chemistry, they may do not know the fundamentals with respect to the ions and electrons. So first of all, I just discuss a few terms with respect to ion and electron. First of all, as I saw, electron is everybody know that is the electron, proton, neutron. उसमें से क्या होता है? प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो तुम्हारे सेंटर्स में होते हैं, एंड न्यूट्रॉन भी तुम्हारे सेंटर्स में होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और स्पेसिफिकली निगेटिवली चार्ज होते हैं एंड जो तुम्हारे एटम के सामने सराउंडिंग में घूमते रहते हैं. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल कंपाउंड और स्टेबल एटम? स्टेबल एटम इज नथिंग बट द each compound have their electrons and they are moving in their orbitals. There are different orbitals in atom, right? So s p d f करके उसके orbitals होते हैं. फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में आई थिंक 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. उसके बाद 18 और ऐसे 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. व्हेन द पर्टिकुलर कंपाउंड और पर्टिकुलर एटम इज डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन. ठीक है. जैसे कि दे आर बैलेंस, मतलब इमेजिन करो कि कार्बन कार्बन इज हैविंग टोटल, आई डोंट नो कार्बन कितना होता है, 8 मॉलिक्यूलर, उसके देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन और 6
I really don't know. So imagine करो carbon. I just see on internet, so better it will be where I really forget कि how much present. I think 12 carbon का mass होता है ना. Just wait a second. So it can easy to understand. यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है क्या? I just show you image so it will be easy to understand. Okay. So 12 6 elect. Okay. So यहाँ पे देखो कार्बन. This is the sorry valence electronic configuration of carbon. तो center में उसका nucleus है definitely. So 6 electron of the outsource and 6 जो proton वगैरह रहेंगे उसके हिसाब से उसका. I'm sorry क्या हो गया? Just wait a second. ठीक है. सो देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो जनरली सपोज किसी भी कंपाउंड से कि अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल्स में है. सो व्हेन कार्बन इज डोनेटिंग देयर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, अभी ये कॉन्फिग लास्ट सेल वाला जो वैलेंस सेल है उसमें से सपोज कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सो डेफिनेटली इट्स कम वन मतलब पॉजिटिव चार्ज अपॉन दिस. ठीक है. there are two terms cation and anion. ठीक है, which is a form of your ion. Ion are generally in a two terms, that is your cation and anion. जैसे कैथोड ऑलवेज निगेटिव होता है, एनोड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कैटन एंड ऑलवेज अपोजिट इन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो कैथोड अगर निगेटिव है तो कैटन ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ठीक है. सो पॉजिटिव आयंस मीट व्हाट, व्हेनेवर एनी एटम it's donate their electron, not proton and neutron. When they are donate their electron, so they give a plus positive charge on that particular atom. So whenever compound it start donating their particular electron, so they get the charge on that particular atom. This particular charge ion atom is called is nothing but the ion. If you want to say, I can see the image of ion, so it will be easy to understand because this is the basic concept to understand in your mass spectrometry. One second. There is no proper diagram for ion. Okay. ओके. सो यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. सो ये कंपाउंड है, यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज द वन सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेप. देयर आर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हेन दिस पर्टिकुलर. हॅलो मॅम. येस येस हॅलो येस. मॅम, स्क्रीन नाही दिसत आहे. ती Okay. विंडो नाही दिसत आहे, तुम्ही जी ओपन केली ती. Wait a minute, I will share the new screen. Okay, now the screen is visible. येस मॅम. Okay, now see, this is the particular compound. Okay, so this is your Na ka molecular. It is the number of proton present is 11, so is equal to the number of electrons. So charge is 0 because तो अभी यहाँ पे देखो there are 2 electrons in this particular share, then 8 electrons यहाँ पे रहेंगे and 1 electrons. When this particular compound donate this particular electron, जब वो electron किसी और को देता है, that time the compound lays the plus positive charge. And whenever the compound is taken electron from other compound, the compound get negative charge. बगा तो किसी अपने पास नहीं है, मतलब उसके ऊपर कर्जा हो गया, तो जितना कर्जा उसके ऊपर होता है, that is nothing but a negative charge, and जो कर्जा देता है, that is nothing but your positive charge. So this particular atom is giving one electron, so that's why it's particular getting the plus one charge. Suppose it's donate the 2 electron, then it get the 2 charge, that is your कैटायन. ठीक है. ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन होते हैं वो कैटायन होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं वो एनायन होते हैं. सो दिस द वे वी फॉर्म द आयन. ठीक है. सो whenever compounds start donating their electrons, they are starting converted to the
ion. And when the compound, because mass spectrometry is majorly based on identification or analysis of your anion based on mass to charge ratio, मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड का कितना मास है एंड उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसका जो रेशियो होता है, that is the basic fundamental for analysis of that particular compound, because based on that they can easily find out the molecular weight of that compound, which is very unique. मतलब इमेजिन करो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से तुम लोग को Na फाइंड आउट करना है, तो जैसे कि बोला each atom have the unique feature and characteristics, मतलब Na is never equal to the Cl or H is never equal to the He. Each compound have their unique properties. Why they have their unique properties? Because they have different combination of their electron, protons and neutron. And उसके हिसाब से each and each compound, मतलब दे periodic table में बहुत से compound, there are number of periods and number of rows, तो उसके बहुत सारा characteristics same है, but still each compound is different from the other because each compound their unique property based on their electron and proton, and each compound have their unique mass. ठीक है, सो जैसे कि अभी ये कंपाउंड है सपोज Na, सो Na के ऊपर Na का अभी मास कितना है, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर, उसका मास रहेगा. ठीक है, तो उसके ऊपर सिंगल चार्ज है. ठीक है, सो मास टू चार्ज रेशियो मींस मास 11 डिवाइडेड बाय 1. तो मास टू चार्ज रेशियो ऑफ Na कितना आया, दैट इज 11. तो इमेजिन करो दिस इज अ पर्टिकुलर अननोन कंपाउंड जो तुम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड आउट कर रहे हो. फाइंड आउट करने के बाद तुम लोग को मास स्पेक्ट्रा मिला, जिसके अंदर तुम लोग को एक पीक मिला स्टैंडर्ड स्टेट लाइन में. जो पीक मिला उस पीक का वैल्यू है, उसका मास टू चार्ज रेशियो है 11. तो एज पर पीरियोडिक टेबल में वो किसका वेट 11 है, Na का. ठीक है, सो जो भी अननोन कंपाउंड प्रेजेंट है तुम्हारे कंपाउंड में वो कौन सा कंपाउंड है, Na. So this is the way mass spectrometry actually find out the unknown compound, because each and every compound have their unique mass based on their electron, protons and neutron configuration. So based their mass to charge ratio, the mass spectrometry easily understand what is exactly the molecular weight of that compound. Based on the molecular weight, they can easily find out what are the compound based on the, what are the specific compound present in your analysis. अनदर थिंग्स व्हेनेवर द ये कंपाउंड, मतलब जनरली मास टू चार्ज होता है या फिर जो कुछ भी प्रोसेस होता है उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तुम्हारे कंपाउंड को चार्ज डेवलप होने के लिए, बिकॉज स्टेबल होते हैं ना कंपाउंड, तो उनको चार्ज डेवलप होने के लिए फिर स्टार्ट डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, वी आर स्टार्टिंग द बम्बार्डिंग ऑफ number of chemicals, or you can say the number of energy, electric rays वगैरह we are applying on your particles. So after bombarding with the electrical ions or different charge electrons on your compound, the major stable compound start releasing the electrons. Sometimes they are break down into the different fractions. जैसे कि suppose तुम्हारा compound Na रहेगा, so Na के साथ when तुम लोग break down करोगे तो सबसे पहले NaCl से single molecule जाने के बाद उसका molecular weight होगा. उसके बाद द कंपाउंड में भी स्टार्ट फ्रैगमेंटिंग, मतलब छोटे छोटे फ्रैगमेंट, उसमें 2 फ्रैगमेंट बनेंगे, एक Na बनेगा, एक Cl बनेगा. कि तुम लोग Na का मास फाइंड आउट करोगे, Cl का मास फाइंड आउट करोगे, दैट इज समथिंग बट फ्रैगमेंटेशन और क्लीवेज ऑफ योर कंपाउंड. आई एम सॉरी, मे बी द इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो था. सो okay, so we will continue. I just once again share the screen. Okay, so we are on the particular compound. It is how exactly mass spectrometry is used for identification of the compound. So I just giving the live example कि जैसे कि generally it is used for ion for identification of the compound. So how the ion is formed? Ion is formed when the particular compound start donating or removing electron that particular compound. The compound get charged. तो जो positive charge वाले maximally MSs work on their positive charge ion, that is nothing but the cation. So positive charge कैसे बनता है? When the compound start donating their electrons, they come to the positive charge. तो जैसे मैंने बोला based on that positive charge, mass to charge ratio, अभी specifically when for single electron donate होता है तो single one charge आता है. So based on that is your parent ion. So parent ion से you can easily find out the what is the molecular weight of that compound. Based on the molecular weight, you can easily identify the what is the compound present. Then the compound start breaking down, fragmentation. The fragmentation से उसके छोटे 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 बहुत सारे ions बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं parent ion. मतलब जो major ion होता है जिसमें से सिर्फ single electron donate होता है, that is nothing but your parent ion. When parent ion is start destroying, not only it can destroy,
start dissociating or break down into the single different ion based on, because compound is a complex structure. जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो नंबर ऑफ उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो उसके अंदर डिवाइडेड हो जाएगा based on that particular structure, or find that mass to charge ratio of that each and every ion or every radical which is formed after the breakdown of the compound. We can easily find out the what are the different atoms or present in that particular compound. Based on their atoms and based on their mass to charge ratio, we can find out the chemical formula, or we can easily say we can find out the structural formula of this particular compound. So this is the basic fundamental ki how exactly mass spectrometry works. Okay. So I just share once again your that screen, which is the PPT wala screen. So I hope now you understand what is the exactly concept of ionized molecule. Let's see the once again that particular paragraph after under discussion this particular point, so you can easily understand what they are actually saying. So it involved the production and separation of ionized molecule. Now you know how the ionized molecules are formed. So their ionic decomposition product, that is nothing but the when we bombarded the lots of electron or energy to divided that particular molecule, that is nothing but the ionic decomposition of the product. And finally the measurement of the relative abundance of different ion produce. जैसे कि मैंने बोला NaCl रहेगा तो उसके Na and Cl से दो ion produce हो जाएंगे, then उसका फिर से cleavage हो जाएगा. So based on that cleavage you can easily find out what are the different ion present in that particular compound. Thus, it is a destructive technique, that is the sample is completely destroyed and you get the find the weight of that particular compound. So most of the cases, nascent is nothing but a new ion or new molecule, okay, which is formed the produce a fragment ion by cleavage of the bond and resulting fragmentation pattern in constitute of the mass spectrum. जैसे मैंने बोला कि each ion होगा and every ion का वहाँ पे peak आएगा, तो based on the molecular weight or we can say mass to charge ratio of that particular ion, उसके हिसाब से तुम लोग उस particular compound का expected mass क्या रहेगा वो find out करोगे, and based on that mass you can find out the particular compound. The mass spectrum each for each compound is unique and can be based on their chemical fingerprinting as a characterize of the sample. जैसे मैंने बोला कि each compound में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से न्यूट्रल का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है. तो जब भी कंपाउंड क्लीवेज आयन फॉर्म्स करता है तो डेफिनेटली उसका आयोनिक कंपोजिशन में मास टू चार्ज रेशियो जो आता है वो ईच एंड एवरी कंपाउंड का वेरी यूनिक होता है. तो उसके हिसाब से बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो you can easily identify the which compound or which molecule is present in, or which atom you can say present in that particular compound. Not only the atoms, you can easily find out the isotopes of that particular compound. जैसे कि कार्बन के अंदर कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है. So उसका जो मास टू चार्ज, बिकॉज कार्बन 13 14 13 12 और 14 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन योर न्यूक्लियस. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा रहेंगे बेस्ड ऑन दैट उसका क्या रहेगा, वेट ज्यादा होता है. सो मास टू चार्ज रेशियो में डेफिनेटली उसका मास टू चार्ज रेशियो एग्जैक्टली यूनिक आता है, मतलब कार्बन का 13 और 12 आएगा, जिसके हिसाब से अगर वो पर्टिकुलर कंपाउंड में सम अमाउंट ऑफ कार्बन 13 और सम अमाउंट ऑफ कार्बन 12 प्रेजेंट है, तो उसके भी दो अलग अलग पीक आते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड में कार्बन के दो आइसोटोप्स प्रेजेंट है, इट इज द 13 एंड 12 वाला. This is also very easily you can find out with the help of mass spectrometry. So this is a very specific and very unique with respect to each and every atom. Based on that we can easily find out. ठीक है, तो अभी तक मतलब सेकेंड स्लाइड जो भी हम लोग ने पढ़े उससे हम लोग को व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम योर सेकेंड स्लाइड. फर्स्ट स्लाइड से कंक्लूजन था कि इट इज अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इज अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोमेट्री. मेजरली इट इज वर्क ऑन मास टू चार्ज रेशियो, मतलब जो भी सॉरी मेजरली इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट. सेकंड पॉइंट हम लोग ने जो फर्स्ट स्लाइड से पढ़ा था वो था कि द कंपाउंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. सेकेंड स्लाइड में हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में दो पॉइंट देखे कि इट इज अ सैंपल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड सेकंड दैट इज इट इज नॉट इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह, it is directly based on to find out or identification of the mass of that particular compound. How they are identify the mass of the particular compound? Whenever your compound it interact with the beam of electrons, तो जनरली बाकी के स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होते थे, एटम एक्साइट होते थे. Whenever here the compound is interact with the beam of electrons, the compound are start ionize. How they start ionize?
By donating the electron, they are from ions, and based on their ions, we find out mass to charge ratio of that particular ions. And based on the mass to charge ratio of that particular ions, we can easily find out what is the molecular weight of that particular atom or compound. And based on their molecular weight, we can easily find, or we can easily understand what is the exactly compound present, unknown compound or unknown atom present in your sample of analytes. So that is nothing but the fingerprinting pattern. Fingerprinting pattern is nothing but the, first of all, you get the peak of your parent ion. That is, parent ion is nothing but the molecular, the compound. जो तुम्हारा NaCl, suppose imagine करो NaCl molecule तुम लोग find out कर रहे हो, तो NaCl में से सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन जाने के बाद उसके ऊपर 1 चार्ज आएगा, एंड NaCl का जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय चार्ज आएगा. सो दैट इज योर कंपाउंड. ठीक है. उसके बाद आफ्टर कंटिन्यूअसली bombarding with the beam of the electrons, NaCl start short breaking down into the parents, say daughter ions. So just for example, see कि उसके दो daughter ions form हुए, Cl and Na. ठीक है. तो उसका मास टू चार्ज रेशियो से तुम लोग को पता चला कि इसका ये मॉलिक्यूलर वेट है. हम लोग उसको और ज्यादा टाइम तक मतलब इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे तो उसके ये दो पेरेंट आयन बने. उस दो पेरेंट आयन के ये पर्टिकुलर मास है. उस मास के ऊपर हम लोग को पता चलेगा दिस पर्टिकुलर आइसोटोप्स ऑफ Cl और दिस पर्टिकुलर आइसोटोप्स और Na इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. दैट इज नथिंग बट. सो उसके बाद यू कैन से द, जैसे कि सपोज उसके जो आयंस का उसके फाइंड आउट, यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर. उसके लिए आगे थोड़े से है फ्रैगमेंटेशन के रूल्स. तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन इजीली कैरेक्टराइज. तो ये जो पैटर्न आता है ना हर एक मास टू चार्ज रेशियो का, जैसे कि पेरेंट आयन, उसके बाद जो इतने भी डॉटर्स आयन के पीक्स मिलते हैं वो पेरेंट आयन प्लस नंबर ऑफ डॉटर आयन के पीक, that is nothing but the fingerprinting pattern of that particular compound, which is very specific with respect to that particular compound. So on this basis, so we can easily find out the unknown compound. So that is the basic idea कि exactly mass spectrometry में होता क्या है. ठीक है. So क्या होता है mass spectrometry में? कंपाउंड होते हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम से कंपाउंड आयोनाइज होते हैं. आयोनाइज होने के बाद दे आर स्टार्टिंग डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं उसके हिसाब से क्लीवेज फॉर्म होता है. बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो हम लोग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं. बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर का वेट वी कैन फाइंड आउट द अननोन compound. So I think only 1 minute is left. So here we will stop. I hope you understand the basic idea or basic fundamental behind your mass spectrometry, and I hope you understand कि exactly mass spectrometry में क्या होता है. So the session is open for the discussion. If you have any doubt with respect to the mass spectrometry, you can write in the chat box, or if you understand, then just write yes in your chat box. Yes, do you understand? Varas Shinde has raised your hand. Okay, Varas Shinde. So, afternoon session, we will definitely discuss your doubt. Okay. Anybody else having any doubt? Ma'am, what is a nascent molecular ion? No, ma'am, sorry, by mistake. Okay, so it's okay. Nascent ion is nothing but the new molecule. That is a new compound. It is a nascent. Okay.